Karnataka, an initiative by Safe Motherhood Committee FOXY and Kasoga. Today is the third and the last session of classes on GDM for healthcare workers. We are sure you have revised well in order to understand further. We have with us Dr. Rajshri Paladi, who is the General Secretary Kasoga, also the Director at Aditya Multi-Speciality Hospital and Professor OBGYN at KBN University, Gulbarga, Karnataka. I request Dr. Rajshri to kindly say a few words and welcome our honored faculty and delegates. Pranamam everybody and good afternoon. Respected members present on this virtual dais, in a commitment towards learning more of the gestational diabetes, I welcome you all. I welcome Dr. Rishikesh Pai, Dr. Madhuri Patel, and the Safe Motherhood Committee Chairperson, our own Dr. Preeti Kumar, who has always been a guiding force and motivational force for these programs and has designed a very thought of module so that all of us can be benefited out of this learning, and the healthcare workers who are very fortunate, I can say, so that they can learn more about the gestational diabetes, and it has been a very well programmed and designed compact teaching modality. I welcome Dr. Sangeeta Arya, Dr. Shaili Agarwal, Dr. Parul Gupta, Dr. Bhavna, and Dr. Shobha Shavi, who are all present in spite of the Sunday afternoon when one would like to raise you off in the comfort of your home, but still we have all the dedicated members who are present here to learn more about how we can manage the gestational diabetes and what will be the long-term implications of gestational diabetes. We have already learned how to diagnose and what is the overview and what are the problems associated with diabetes. Today we shall learn more about the management aspects of diabetes mellitus, and with this I hand it over for the further proceedings and to listen to what we have to learn from Dr. Shaili Agarwal and Dr. Sangeeta Arya. Thank you very much, Preeti ma'am, for having me on this, and thank you, Shobha, for coordinating the Kasoga with Foxy every time, and Dr. Parul Gupta, so beautifully comparing and making us connected each and every time. Hearty welcome to you all. Thank you, Dr. Rajshri. Thank you so much. And I think Dr. Vidya has not been able to join. Dr. Shobha? Madam is not picking up the phone, madam. Maybe she's busy with something. So we are all here in this noble journey because of the constant determined efforts of the chairperson, Safe Motherhood Committee Foxy, Dr. Preeti Kumar. She is the perfect amalgamation of passion, hard work, vision, patience to deliver the best to the society. Thank you, Dr. Preeti. I now request you to say a few words. You're muted. Am I audible now? Yes. Thank you so much, Dr. Parul. On behalf of Foxy, of course, Dr. Pai, Dr. Madhuri, and Dr. Alka Pandey, I would like to welcome each one of you. And thank you, Dr. Rajshri, always saying some lovely words for me and for the team. Shobha and Dr. Rajshri, I really admire and appreciate your efforts because you have joined almost in every meeting. And we also, learn at every platform how best we can make it more useful and for the participants. So thank you. And today we finish off with the GDM as mentioned by Dr. Rajshri Paladi, the topics which will be covered today. Wonderful speakers we have today, Dr. Shaili Agarwal and Dr. Sangeeta Arya. Both of them are professors in medical college and almost going to be the head of the department very soon. So they are very senior faculty members. And Dr. Vidya has joined. Lovely. We are lucky today. Yeah, joined, just finished one cesarean. Okay. So we'll have few words from you also, but I'll request Shobha, maybe tomorrow you can generate another link and explain about the logbook to the participants. I will give concluding remarks. Okay. So Dr. Shobha, please create a link tomorrow and try to explain about the logbook to the participants because we have already completed anemia and GDM. They are supposed to write 4 or 5 cases and how they are managing in their facility. And for hypertensive disorders, we have just kept how to take blood pressure, Pritchard regime, and gestosis score. So they don't have to write the cases in hypertensive disorders. They have to write 4 cases of hypertension, anemia and GDM. So explain them so that they can start making, because in the final assessment, we will also have a look at the logbooks.
So they should make the diagrams, colorful diagrams, regarding the diet, the food, what in anemia, also in GDM. So the logbook should be complete of each and every healthcare worker, and whosoever will present the logbook and will appear for final assessment will get the certificate from Foxy. So rest those who have not completed the course, who have not attended the modules, who have not appeared for the assessment, I'm sorry, they will not get any certificate from Foxy. So please encourage all the healthcare workers from these facilities to join. And once we finish this, we will parallelly start the panel discussion for the doctors. So maybe after 26, I'll frame how the panel discussion will go. And all the facilities in charges will be included in the panel. And some senior member from Foxy will be conducting the panel on anemia, GDM, and hypertensive disorders. So thank you once again. And I think the healthcare workers are also very enthusiastic to learn. And I always appreciate and admire their participation in the quiz and question and answer. So we want more and more to respond to the queries and quiz. And they should also, ask questions. Otherwise, we'll not be able to know how much they are learning and what are their gaps. So thank you once again. Over to you, Dr. Parul. Thank you, Dr. Preeti. And all of us here, thank you for the countless hours you're putting in to bring the venture into shape. Thank you so much. And should Dr. Shobha take up some questions, or should I continue with the last? Shobha will take up probably Sangeeta's, maybe she will translate both the talks in Kannada. Okay. Just a brief summary of the talks in Kannada. So we start with the talks of the day. Our first speaker, Dr. Sangeeta Arya, is busy. So we directly move to the second talk, and Dr. Sangeeta will take up the talk in the end. So I introduce my first speaker, Dr. Shaili Agrawal. She is the Professor OBGYN GSVM Medical College, Kanpur, and a core member of Safe Motherhood Committee, Foxy, and to top it all, a very good friend. She is going to tell us about long-term follow-up in GDM. Over to you, Shaili. Thank you so much, Dr. Parul ma'am. And I'm very thankful to Dr. Preeti Kumar ma'am, Chairperson of Safe Motherhood Committee, for giving me this opportunity to interact with the lovely people of Karnataka and to contribute a little for her project, her ambitious project. So we'll begin the presentation of the postpartum follow-up in GDM. So for the last couple of days, you must be learning. You must be learning about the GDM, what is GDM, how it affects the pregnancy, how it affects the mother, how it affects the newborn baby. And the journey is not end with the delivery of the baby. This is the condition in which Shaili, sorry to interrupt. Please make it full screen. This is full screen, ma'am? No, it's not full screen. At my side, it is full screen. Madam, make it slide share. Press on slide share. Or you can stop sharing and again reshare. Okay, ma'am. सार्थक एक बार देखना बेटे क्या हो रहा है? I am again sharing this. Is it visible now? Yeah, it's Not full screen. yeah, It's now. full screen. Yes, It's yes, full yes. screen. Okay. So this is the condition in which we have to follow up these patients even after the delivery for a long time, because these patients are very prone to develop further disease like diabetes, like cardiovascular diseases, abnormal lipid profile, and so are their babies. So why to do this follow-up? Why this is important? We'll learn when to do, what is the right time to do the testing, and how we should do the testing. So we all know if the patient is suffering from GDM, that is gestational diabetes mellitus, her baby has more chances of preterm delivery due to some complications. There are more chances of congenital malformation in the baby, especially the heart diseases and the other problems.
These babies are very prone for the respiratory distress syndrome because of prematurity. There's risk of stillbirth, intrauterine death in the uterus itself. Macrosomia, the baby may be having the large birth rate. They are more prone for cesarean sections and hypoglycemia and seizures. But the important point is this, that these babies are very much prone to develop obesity and the type 2 diabetes mellitus later in their life. So about 60% of babies which are born to GDM mothers, they are having possibility of developing obesity and diabetes. If we talk about the mother, these mothers are very prone for the problem of high blood pressure, preeclampsia, eclampsia, and also after the delivery, these mothers are having chances to develop obesity and type 2 diabetes mellitus, 60 to 70% cases. So this is important. We should follow these patients very carefully. Beside this, in the postpartum period, we have the opportunity to counsel these patients to initiate effective contraception for the proper birth spacing between two babies and to control her sugar level and to make it optimal for the next childbirth. So to prevent the chances of future obesity, metabolic syndrome, diabetes, hypertension and cardiovascular diseases, we have to do the long-term follow-up of these patients. Now, when to do? Why do we understand? Because this is very important. But when to do? We all know the maternal glucose levels usually return to normal after delivery. So, usually, even if they are having normal sugar after delivery, after cesarean, but these patients has to be called back for the testing at the 6 weeks postpartum. So this is important. At the 6 weeks of postpartum, we have to repeat their OGTT. We have to do a fasting and we have to do a 75 gram OGTT. And these are the values we should remember. If fasting is less than 110 milligram of deciliter and 2-hour ppbs after 75 gram of glucose is less than 140 milligram per deciliter, then this is normal. If it is between 110 to 125 milligram per deciliter fasting and 2-hour ppbs is between 140 to 199 milligram per deciliter, this is the impaired glucose tolerance. It shows that these patients may develop diabetes later on in their life. But if the values are more than 126 milligram of deciliter fasting and more than 200 milligram deciliter ppbs, then this is labeled as a diabetes. So these values we should remember. This is a simple test. At 6 weeks postpartum, we have to do a fasting and a 2-hour pp. And accordingly, we have to categorize the patients. If it is normal, then too, we have to counsel the patients for lifestyle modification, proper diet, proper calorie intake, exercises, monitoring of their weight. And also these patients are advised for annual screening for diabetes in the NCD clinic, that is non-communicable disease clinic. So once a patient has developed GDM during pregnancy, she should be followed up for life in an NCD clinic because she is more at risk for developing diabetes and obesity in her later life. But if our values are positive, either it is impaired or either it is full-blown diabetes. So these should be referred to physician for further management. So we have to do a yearly follow-up once in a year. And if the patient is obese, she is having BMI more than 25, then we have to do the lipid profile of her also, because to rule out the cardiovascular diseases risk. Beside this, in postpartum, we have to immediately initiate the neonatal care. This should be done for every newborn. And we have to promote early breastfeeding. As soon as mother is comfortable in breastfeeding her baby, she should be allowed to start the breastfeeding.
And this breastfeeding not only helps the baby, but also helps the mother. Breastfeeding controls the sugar levels and helps in maintaining the normal glucose level in the blood. She should be advised for exclusive breastfeeding. Means for 6 months, she has to give only and only her milk to her baby. No water, no ghutti, no shahad, only the water. These babies, we should do the blood sugar every 4 hours because these babies are very prone to develop hypoglycemia. Now, baby is outside the mother's uterus and he or she is very much likely to develop hypoglycemia if it is not properly fed. So we have to monitor. The cutoff value for the hypoglycemia in the baby is less than 45 milligram of deciliter. Also, we have to evaluate the baby for the respiratory distress syndrome, possibility of conversion is there, possibility of hyperbilirubinemia due to preterm baby. So we have to carefully care these babies and we have to observe the babies and also tell the patient and her relative about these warning signs. All these mothers who are having gestational diabetes mellitus, they have to be linked with the NCD program, that is non-communicable disease program. And this activity can be done by the ASHA, by the ANM, by the staff nurse, by the medical officer. So this is important to make them understand that this linkage is very important because they are very much at high risk for developing diabetes, obesity, and cardiovascular diseases in the later. In these NCD clinic, they are counseled about the importance of regular blood sugar monitoring, exercise, and diet. And this is the card which we should be given to the mother. And there's the growth chart for the baby. A sticker of red dot can be put on this card so that this can be alert to give care to these offsprings and their mother. And we have to follow up these patients for the contraception advices and the lifestyle changes. Now, what we have to counsel? We have to counsel them for the strict blood sugar control. Their blood sugar levels should be normal. They have to modify the diet. They have to take a proper amount of proteins, fats, carbohydrates, along with the other nutrient vitamins in their diet without getting the extra calories. And they have to do daily exercise for at least 20 to 30 minutes per day. And they have to do exclusive breastfeeding for their babies and to opt for some contraception. So we'll discuss these points one by one. Now coming to the diet, they have to understand their diet properly. They have to take the proper amount of proteins, which is essential for the growth of their babies. And also they have to be counseled regarding the which carbohydrate is good for them. They have to take the complex carbohydrate, not the simple carbohydrate, which raises the blood sugar very quickly. Saturated fat like ghee, oil, they should be less than 10% of the total calories. So their thali should be like this. In this plate, the half of the thali should be with the seasonal vegetables and fruits and salads. This is very important. It is a rich source of vitamins and other minerals. 1/4 portion should be the cereals, like it can be roti, chapati, chawal, and this 1/4 is the good quality protein. It can be animal protein, it can be a plant protein. So this should be the composition of thali, along with a plate full of seasonal fruits and 1 serving of dairy products. This can be milk, curd, or paneer. So they have to take their food very carefully and in the titrated quantity to avoid the excessive weight gain. Coming to exercise, they have to exercise daily for 20 minutes at least after a meal. After the meal, this walking helps them to keep their blood glucose within the target range.
But they should be very much careful to avoid the falls and they have to keep the balance. So these are the exercises which they can do in the postpartum period carefully to maintain the blood sugar level normal and to shed off that extra weight. Coming to the breastfeeding, we have to initiate the breastfeeding as early as possible, preferably within the first hour after the birth. For the first 6 months, they have to feed the baby exclusively from the breastfeed only. Even in the night, they have to give the breastfeeding. And this breastfeeding should be continued for at least 2 years. After 6 months, the baby should be started giving the complementary food. This can be dalia, this can be dal, this can be vegetables, because baby needs extra calories after 6 months. So after 6 months, they have to start the complementary food. But the breastfeeding should be continued for at least 2 years after the birth. And this is very good for the baby. This provides them important immunoglobulins, important minerals, important nutrients. Also, it improves the intelligence quotient. Baby becomes wise, baby becomes intelligent. This helps in reducing the risk of overweight and obesity in childhood and later life. It has been seen the babies who are breastfed, they are less prone to become obese in the teenage life. Breast milk feeding also reduces the risk of infections like gastrointestinal infections, diarrhea, respiratory infections, cough and cold, and so on. By breastfeeding, we reduce the chances of infant mortality because infections are less. The babies have less dental problems. There's reduced risk of developing non-communicable disease like diabetes, cardiovascular disease after the breastfeeding. They improve the appetite regulation, so helps in the keeping the weight in the normal range and also improve the growth of the baby. So these are the enormous benefits of exclusive breastfeeding. Then the point is contraception. Contraception is very important for the proper spacing between 2 pregnancies, and if the family is complete, then to avoid the accidental pregnancy or unwanted pregnancy. So depending on the need of the patient, if the family is complete or not, he wants another baby or not, we can give advice accordingly. If he wants a baby, we have to give her a spacing method, that is a temporary contraception. This can be barrier method like condom. This can be IUCD, which is inserted inside the uterus. This can be pills. This can be injections. But if the family is complete, she do not want more babies, then we can also advise terminal method of contraception like the permanent method, male or female sterilization, we can advise. So we'll discuss one by one briefly. In barrier method, this can be either a male condom, it can be a female condom, or there can be diaphragms, there can be spermicidal jellies. All these can be used, but these have a limited success rate. Failure rate is more with them. So we have to counsel to use them an effective contraceptive method. They should know how to use the method correctly to avoid the accidental pregnancy. So these are the various male and female condoms which can be used after the proper instructions. We can train the patient and her spouse to use them properly. Then they can be, we can use the pills also where they are very effective, they are very safe also. The new generation contraceptive pills, they have very low dose of hormone, they are very effective, and also they have minimal effect on the carbohydrate metabolism. So they can be safely used in diabetes patients also. Then if she do not want to use the combined pills, or she is her sugar is not that good, so we can also give her progesterone only pills or your mini pills. They have to take it accordingly, daily 1 pill. At the same time, we should counsel them to take the pills daily. Do not miss the pills. If she misses the pill, she can get the pregnancy.
and the more chances of abortions and other further complications. Then there can be hormone preparation, which can be used as an injection also. So this is a 3-monthly injection, DIMPA, 150 milligram intramuscular we give, and we call her after 3 months for the second dose. Then there can be implants also. And this is a very wonderful drug. This is a non-hormonal drug. It is developed in India itself. Because this is non-hormonal, this has minimum effect on the carbohydrate metabolism. It acts by altering the endometrium. They prevent the implantation. And this tablet is very simple to take. For the first 3 months, she has to take this tablet only twice a week. If she is taking first tablet on Monday, second tablet she will take on Thursday. And after 3 months completed, she has to take this tablet only once a week. So this is very important, but we have to counsel the patient for the proper usage. Then coming to the intrauterine devices, they are long-term contraceptive methods. They are inserted inside the uterus. They are available in different forms. Copper T380 is for 10 years. Once you insert it, it is effective for 10 years. Then there's multi-load for 5 years, 3 years, and other preparations. So we can advise multiple options to the patient and her husband. Whichever they want, we will help them using. But important thing is this, IUCD should be used only when the diabetes is well controlled. Otherwise, if you use this in the diabetic condition where the sugar is very high, then infections can be there. So proper control of sugar is very important before using this. If the family is complete, we can advise her husband for the vasectomy, or female can go for the tubectomy method. So the important point is, which we should always learn, that these patients, the postpartum follow-up is very, very, very important, because they are having risk of obesity and diabetes in their life after 5 to 10 years. We have to call them for the fasting and 2-hour-PP at the 6 weeks postpartum. So this we have to write in card also कि आपको 6 हफ्ते बाद you have to come back to the hospital and we will do this test. We have to give the essential newborn care and early breastfeeding to all these women to avoid the problem of hypoglycemia in the baby. And in postpartum period, they should be counseled regarding the diet, exercise, contraception, exclusive breastfeeding, and lifestyle modification. So this was all from my side. Quiz will be taken by Dr. Shobha. No, you take it, Shelly. Thank Shelly, you. you can ask. Shelly, you can continue. Ji ma'am? You can continue the quiz. Okay, okay. Dr. Shobha will help you if they don't understand the question. Okay. So the risk of diabetes mellitus in the later life of pregnancy with GDM is 20%, 40%, 60%, or 80%. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು GDM ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Somebody has answered in the chat box 60%. 60%. Okay. So answer is correct because there are 60 to 70% chances. So the 60% is correct answer. Okay. After how many weeks of post-delivery, the patient with GDM is called for the follow-up? 6 weeks. 4 weeks, 6 weeks, 8 weeks, 6 12 weeks. weeks. 6 weeks. Very good, very good. They all have learned. At 6 weeks, we have to call the patient for the fasting and 2-hour PPBG after 75 gram glucose. Very good. If 2-hour PP is more than 200 milligram per deciliter, next step in management is send her home for the self-monitoring of blood sugar,
She should be linked to NCD clinic for further management. Repeat the test after 2 weeks. Start insulin. Start insulin, ma'am. She is not pregnant now. Uski pregnancy, she has delivered the baby. But she is diabetic, definitely, you are correct. So we have to send her to the physician. Now the physician will take care. They can give her OHA also, they can give her tablets. If the tablets are not effective, then insulin can be started. Okay, very good. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದು PPBS 200 ಮೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು NCD ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ನೀವು go ahead with next question. The patient on 75 gram glucose OGTT, it is 108 milligram per deciliter. At 6 weeks follow-up, what you advise her? Now this is normal. What should be advised? 6 weeks. All of them. Very good, very good. Because even if it is normal, she can have the problem of diabetes of later life. So we have to counsel her for diet and lifestyle modification, weight monitoring, exercise, and just annual screening for diabetes in NCD clinic. Very good. Blood testing in neonate should be done every 2 hourly, 4 hourly, 6 hourly, or 8 hourly. 4 hourly. Yes, it is 4 hourly. Okay, very good. 6 hourly ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ 4 hourly. It is 4 hourly. 4 hourly. Meal with rice and potato has the high glycemic index, medium glycemic index, or low glycemic index? high Very good. So we have to avoid the items which have high glycemic index. Good. So this was all from my side. Admin, please mute everybody now. Admin. Thank you so much. Thank you, Dr. Shaili, for such a wonderful talk and such a simple explanation of such a long, complex problem. Thank you so much. Our next speaker is Dr. Sangeeta Arya. Dr. Sangeeta, you there? Just raise your hand. Yes, she's there. She is there. She is there. And head OBGYN, Shaili. Dr. B.S. Kushwaha Institute of Medical Sciences, Kanpur, and is a core member of Safe Motherhood Committee, FOXY. She is going to teach us about the management of gestational diabetes mellitus as regards oral hypoglycemic agents and insulin. Dr. Sangeeta, please. Dr. Sangeeta, unmute yourself, please. Unmute yourself. Yeah. Is it? Can you hear me, Ma? Yes, we can hear you. Good evening, everyone. Sorry for being late. I was noting and couldn't realize क्या time हो गया है. So good afternoon, Vidya ma'am, Preeti ma'am. So I'll be telling about the management of GDM, about the oral hypoglycemics, as well as the oral hypoglycemics, as well as the insulin. So whenever we have learned from the previous lectures that whenever the blood sugar we have done the OGTT किया, उसके बाद हमारी एक वैल्यू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आई and 200 से कम आई. तो इसके बाद what we will be advising medical nutrition therapy along with exercise. We have learned about medical nutrition therapy and exercise कि उसको we have to advise it for 14 days, यानी 2 weeks तक उसको advise करके then we will call her again. And उसी टाइम पे when it was more than 200 mg/% जब हमने OGTT किया, OGTT यानी 1 step 75 mg ग्लूकोज वाला किया, 75 ग्राम ग्लूकोज वाला किया, एंड पहला ही टेस्ट हमारा अगर 200 से ज्यादा आया, that means she is diabetic. We have to advise her MNT plus exercise plus medicines.
तो ये वाला ग्रुप तो बिल्कुल अलग हो गया कि इसको हमें उसी टाइम पे मेटफॉर्मिन या इंसुलिन हमको एडवाइस करके भेजना है, एंड फिर इसका मैनेजमेंट भी हम आगे कैसे करेंगे, वी विल बी टेलिंग यू। अब हमारा फिर से वो आ जाता है कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, हमने मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में आपने बताया 4 to 14 डेज तक पेशेंट जो है डाइट का ध्यान रखेगी, डाइट उसके अकॉर्डिंग भी लेना है, एंड शी विल बी डूइंग एक्सरसाइज। अब एमएनटी करने एक्सरसाइज करने के बाद व्हेन शी विल बी कमिंग बैक, हमारे पास 2 हफ्ते के बाद दोबारा आएगी। 2 हफ्ते के बाद दोबारा आने के बाद क्या हम उसको फिर से 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाएंगे? यस और नो? नो, we won't give her 75 gram glucose. We will be straight away going for postprandial. खाना खाने के 2 घंटे के बाद she will be having her postprandial blood sugar. अब प्रेग्नेंट जीडीएम तो हमारी पेशेंट होगी, अगर 140 से ऊपर आ गया दैट मीन्स शी इज जीडीएम। हमने उसको मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी एडवाइस किया 2 वीक्स के लिए। अब 2 वीक्स के बाद वो हमारे पास आई है, एंड खाना खाने के 2 घंटे बाद वी हैव टेकन ब्लड शुगर once again. Now the blood sugar can be 120 less than 120 milligram per cent. तो 120 less than 120 less than 120 आ रहा है, तो दैट मीन्स कि उसमें जो है वो पेशेंट के जो शुगर है मेडिकल न्यूट्रिशन यानी डाइट से एंड एक्सरसाइज से कंट्रोल्ड है। ऐसा पेशेंट को जो लेस देन 120 आया है उसको 2 आवर पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर फर्दर हम रूटीनली कंटिन्यू करते रहेंगे, उसका मॉनिटर करते रहेंगे, बिकॉज अभी हो सकता है अर्ली 24-26 वीक्स पे आई हो पेशेंट, एंड लेटर ऑन जब उसकी प्रेगनेंसी की जेस्टेशनल एज इंक्रीज करेगी तो हो सकता है उसको तब शुगर डिरेज हो जाए। तो वंस एक बार हमको कोई भी पेशेंट 140 अबव मिला, एमएनटी किया, एमएनटी के बाद उसका पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर लेस देन 120 आया, स्टिल हम उसको हाई रिस्क देखकर फर्दर फॉलो अप करेंगे। एंड अगर दूसरा ग्रुप क्या हो सकता है जिसमें मोर देन 120 आया, अब पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर खाना खाने के 2 घंटे बाद 120 से ज्यादा आया, तो अब इस पेशेंट को एमएनटी के साथ साथ हमको वी हैव टू एडवाइज हर मेडिसिन। अब मेडिसिन कौन सी 2 तरीके की हो सकती है, मेडिसिन कुड बी मेटफॉर्मिन जो हम ओरली ड्रग देते हैं, एंड द अदर ड्रग कुड बी इंसुलिन। तो उसमें एंड व्हाट विल बी आवर टारगेट, टारगेट जो होगा हमारा पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर लेस देन 120 होना चाहिए, एंड जो है फास्टिंग ब्लड शुगर लेस देन 90 मिलीग्राम % होना चाहिए। तो हम मेटफॉर्मिन और इंसुलिन थेरेपी इज द एक्सेप्टेड, ये दोनों चीजें एक्सेप्टेड है। इंसुलिन अगर हमारे को मौका, अगर हमारे को चॉइस मिलता है कि क्या हम यूज करें, तो इंसुलिन इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस। लेकिन कई बार पेशेंट क्या होता है इंसुलिन के नाम से ही घबरा जाता है, यूजुअली दे डोंट वांट टू टेक इंसुलिन, एंड देन वी हैव टू एडवाइज हर मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन इज इक्वली एक्सेप्टेड, बट अगर आपके पास चॉइस होगा तो इंसुलिन विल बी द फर्स्ट चॉइस। एंड मेटफॉर्मिन हम यूजुअली 20 वीक्स के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 20 वीक्स से पहले आपके पास कोई पेशेंट आया फर्स्ट विजिट पे एंड यू गेट हर टू बी जीडीएम लाइक 140 से ज्यादा है, बेटर यू स्टार्ट हर विद 140 इंसुलिन व्हेन द पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर इज मोर देन 120, राइट। तो इंसुलिन को हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लिया 16 वीक्स पे हमको लगा कि पेशेंट को हमने ओजीटीटी किया एंड वी फाउंड हर टू बी उसमें और एमएनटी इज नॉट वर्किंग, स्टार्ट विद इंसुलिन। आफ्टर 20 weeks of pregnancy, if we want to start, then we can start with metformin. So coming to the metformin, metformin कैसी ड्रग है? This can be taken orally. यूजुअली इसकी टैबलेट की किस कैपेसिटी में आती है, 500 मिलीग्राम की भी टैबलेट आती है, 1 ग्राम की भी आती है। तो 500 मिलीग्राम की टैबलेट्स जो है हमको पेशेंट्स को एडवाइस करनी है कितनी डोज में, वी विल बी टेलिंग यू। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जब हम मेटफॉर्मिन पेशेंट को देते हैं तो मेटफॉर्मिन बेसिकली लिवर से जो है ग्लूकोज का रिलीज को कम कर देती है, इंटेस्टाइन से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, और मसल्स में ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देती है ताकि ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल्स में आ जाए। तो क्या करती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज से लिवर का फॉर्मेशन कम कर देती है, इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का जो हमने डाइट से लिया है वो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम कर देती है, एंड मसल्स के अंदर ग्लूकोज को ज्यादा भेजती है ताकि ब्लड शुगर कम हो सके। तो ये तीनों तरीके से मेटफॉर्मिन काम करती है। तो मेटफॉर्मिन जैसा हमने बताया वी कैन स्टार्ट आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी,
एंड अगर वुमेन का ब्लड शुगर इज नॉट कंट्रोल्ड विद मैक्सिमम डोज कितनी है 2 ग्राम 2 ग्राम पर डे तक भी अगर उसका इंसुलिन उसका जो है शुगर फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा है। अब आप कैसे शुगर मॉनिटर कर रहे हैं? फास्टिंग से और पोस्ट प्रैंडियल से। जब हमने एक बार मेटफॉर्मिन या इंसुलिन स्टार्ट कर दी तब हमको कैसे मॉनिटर करना है? उसका फास्टिंग देखना है एंड पोस्ट प्रैंडियल दैट टू आफ्टर 2 आवर्स ऑफ मील्स। और अब हमने मेटफॉर्मिन की डोज बढ़ाते बढ़ाते हम कितनी डोज पे आ गए? 2 ग्राम पर डे पे भी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी उसका जो है ब्लड शुगर रेज आ रहा है, कंट्रोल नहीं है। तब हमको क्या स्टार्ट करना पड़ेगा? अलॉन्ग विद मेटफॉर्मिन वी हैव टू स्टार्ट द इंसुलिन। सो द डोज ऑफ मेटफॉर्मिन जो हम शुरुआत करते हैं 500 मिलीग्राम बीडी से स्टार्ट करते हैं। नहीं शुगर कंट्रोल हुआ, धीरे धीरे टीडीएस पे जाएंगे। नहीं शुगर कंट्रोल हुआ तो यू कैन कंटिन्यू अप टू 2 ग्राम, इंक्रीज इट अप टू 2 ग्राम पर डे। फिर भी नहीं हुआ, देन वी हैव टू ऐड द इंसुलिन इन दोज पेशेंट्स। तो हाइपोग्लाइसीमिया, अब इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? जो हाइपोग्लाइसीमिया यानी हमने कोई दवा ली, इंसुलिन ली, सडन हमारा ब्लड शुगर नीचे चला जाता है, उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया एंड शरीर में वजन का बढ़ना इज लेस विद मेटफॉर्मिन इन कंपैरिजन टू इंसुलिन। इंसुलिन से देखा है तो कई बार वेट बढ़ता है हमारा, और शुगर अगर हमने इंसुलिन लगाने के बाद कुछ खाना नहीं खाया तो सडन हम हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकते हैं। तो ये वाले चांसेस मेटफॉर्मिन में थोड़ा कम होता है। तो ये उन पेशेंट्स के लिए ज्यादा अच्छा है जो आपके पेशेंट्स रेगुलर मॉनिटर नहीं करते हैं, रूरल एरिया में बहुत दूर रह रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या फिर उनका कुछ फाइनेंशियल इशू है जिसकी वजह से वो ब्लड शुगर मॉनिटरिंग रेगुलरली नहीं कर सकते हैं। तो बेटर यू स्टार्ट विथ मेटफॉर्मिन। इफ इंसुलिन इज रिक्वायर्ड इन हाई डोजेस, मे बी अगर मेटफॉर्मिन के साथ एक फायदा ये होता है कि मान लिया हमारे पेशेंट इंसुलिन पे बहुत ज्यादा दिन पे था एंड इंसुलिन की डोजेस हम बढ़ाते बढ़ाते मैक्स डोज पे आ गए हैं, अगर तब भी पेशेंट तब ब्लड शुगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो मेटफॉर्मिन आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन के जो है हमारे जो साइड इफेक्ट्स है वो इंसुलिन से थोड़े कम होते हैं। अब हमको टारगेट ब्लड शुगर क्या रखना है? फास्टिंग ब्लड शुगर हमारा 95। जब भी हम उसका मदर है जब भी अपने घर पे मॉनिटरिंग कर रही है, फास्टिंग शुड बी लेस देन 95 एंड 2 आवर शुड बी लेस देन 120 along with medical nutrition therapy, that means she has to continue with her diet as well as exercise. अब अगर पेशेंट को वी आर काउंसलिंग हर टू टेक इंसुलिन, तो इंसुलिन कैसे लेना है? इंसुलिन इंजेक्शन सबक्यूट लगेगा। सबक्यूट कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? वी विल टेल हर दोज साइट्स। हम उसको डायग्राम भी दे सकते हैं कि सबक्यूट उसको लगाना है, और जब आपके पास पेशेंट आई है तो सबक्यूट उसको लगाना सिखाइए, और ब्लड शुगर मॉनिटरिंग कैसे करनी है वो हमको बतानी है। तो हमेशा इंसुलिन सिरिंज जो 40 इंटरनेशनल 40 वाली सिरिंज इंसुलिन सिरिंज हमको यूज करना है। जब हम इंसुलिन सिरिंज की कैप हटाते हैं तो कभी कभी हमने देखा कुछ सिस्टर या स्टाफ या नॉर्मली लोगों का क्या होता है कि नीडल साफ करने के लिए कुछ डिसइंफेक्टेंट लगाते हैं, कॉटन पे स्पिरिट लेके लगाते हैं, तो दैट शुड नॉट बी डन। उसको पहले ही बताइए कि नीडल इज स्टेराइल। इंसुलिन सिरिंज जो है डिस्पोज कर देनी है आफ्टर 1 यूज। एक बार यूज करने के बाद यू हैव टू डिस्पोज इट ऑफ। एंड अगर एक बार इंसुलिन वायल ओपन हो गई तो वो कितने दिन चलेगी? 1 महीना। अगर तब तक वो वायल पूरी नहीं यूज हुई तो 1 महीना खुले हुए हो गया तो उसको हमें डिस्कार्ड करना है। दीज आर द साइट, हमें उसको बताना है कि इंसुलिन कहाँ कहाँ पे लग सकती है। इंसुलिन फ्रंट, सामने और लैटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्म, थाइज एंड आर्म, थाइज एंड एब्डोमेन पे वो ले सकती है। एंड कहाँ स्टोर करनी है उसको हम लगा के भेजेंगे। जैसे ये एब्डोमेन, ये थाइज पे हमें एंटीरियर एंड लैटरल एस्पेक्ट पे लगा सकती है, एब्डोमेन पे एंटीरियर एंड लैटरल एस्पेक्ट पे, एंड आर्म्स की लैटरल एंड एंटीरियर एंड्स पे लगा सकती है। एंड फिर उसके बाद उसको स्टोर कहाँ करना है? फ्रीजर में नहीं स्टोर करना है, उसको फ्रिज के डोर में स्टोर करना है 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में। किसी वजह से गलत तरीके से अगर किसी ने फ्रीज कर दिया है तो उसको डिस्कार्ड करना है, तब वो इंसुलिन इफेक्टिव नहीं रहती है। कई बार हमारे पेशेंट्स के पास जरूरी नहीं है कि दे हैव गॉट रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर अगर नहीं है तो उनको एक जिप लॉक में इंसुलिन का इंजेक्शन जो है जिप लॉक में उसको क्लियर करके
मिट्टी के घड़े में, जिसमें पानी ठंडा रहता है, मिट्टी के घड़े में आप डाल के रख सकते हैं ताकि वो इंसुलिन का टेम्परेचर मेंटेन हो सके और उसकी एफिकेसी बनी रहे। तो डिटेल्स ऑफ इंसुलिन अब जो है, अगर वो पेशेंट कार्ट्रिज यूज कर रही है तो वो उसके अकॉर्डिंग पेन्स होते हैं, पेन के अकॉर्डिंग आप उसको सिखा सकते हैं कि कितना यूनिट्स, उसको यूनिट का डायल करके वो हम बताएंगे कि इतना यूनिट्स आपको ब्रेकफास्ट से पहले लेना है या किसी भी मील से जब भी लेना है, वैसा हम सिखाएंगे। तो हमारी इंसुलिन वायल और कार्ट्रिज कौन सी वाली होती है? इट इज ह्यूमन प्रीमिक्स इंसुलिन 3070। इंसुलिन वायल 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है एंड इंसुलिन कार्ट्रिज, इंसुलिन डोज उसी अकॉर्डिंग हमें जितनी डोज उसको पेशेंट को देनी है उस अकॉर्डिंग हम उसको मेंटेन करके सिखा के भेजते हैं। एंड इंसुलिन वायल को सीधे हमें जो है सनलाइट से एक्सपोज नहीं करना। अगर एक बार खुलने के बाद 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गई है तो आपको उसको, वो स्टेबल रहती है, आप यूज कर लीजिए उसको। प्रिकॉशंस क्या क्या रखना है कि हमें जब इंसुलिन लेनी है तो जहां पर आर्म पे ले रहे हैं या फिर कहीं पे ले रहे हैं तो वहां पे दैट साइड शुड बी क्लीन। प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, यानी जब आप इंसुलिन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने कुछ खाया हुआ होना चाहिए या फिर आपका फूड रेडी है। अगर फूड रेडी नहीं है तो तब तक आप इंसुलिन डिले करिए, क्योंकि इंसुलिन तो जाके बॉडी में आपका हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट करना शुरू कर देगी, तो पेशेंट जो है चक्कर खा के गिर सकता है। तो उसको पहले बोलिए कि फूड की अवेलेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। इंसुलिन का आप एक्सपायरी डेट, जैसे हम हर ड्रग का एक्सपायरी डेट देखते हैं, वो जरूर देखिए, क्योंकि एक्सपायर्ड होगी तो उसकी एफिकेसी नहीं आएगी, पेशेंट जो है हाइपरग्लाइसीमिया में रहेगी। अलाउ इंसुलिन, जब हम फ्रिज से निकालते हैं जो जितना डोज हमने निकाली है, इंसुलिन को थोड़ा सा वार्म हो जाने दीजिए एंड आफ्टर इंजेक्टिंग डिस्कार्ड द सिरिंज प्रॉपरली। एक आप घर में पेशेंट को बोलिए कि एक जो है डब्बा बना के रखे, जो भी यूज्ड सिरिंजेस हैं, यूज सिरिंजेस वो अपने उस डब्बे में डालती हुई रखे एंड जब भी वो हॉस्पिटल में आ रही है तो शी विल बी गिविंग यू दो सिरिंजेस जो आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह तो BMW है नहीं, तो जो है बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजेबल नहीं होगा, तो आप उसको नॉर्मली भी ये बता सकते हैं कि घर पे एक पंक्चर प्रूफ बॉक्स में वो डालती जाए और जब हॉस्पिटल आती है तो वो हमें दे दे, हम वहां पर उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं प्रॉपरली। तो अब इंसुलिन थेरेपी के लिए हम बहुत ज्यादा आपको जब इंसुलिन थेरेपी में बताएंगे तो इंसुलिन थेरेपी बस हम एक रिपीट उसमें बता सकते हैं, बट हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको डोज कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आए, बट आपके डॉक्टर यूजुअली हेल्प करेंगे कि कितनी इंसुलिन उसको लेनी है, कितनी कब लेनी है। बट यस, MNT के साथ साथ 2 आवर्स पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर अगर 120 मिलीग्राम % से ज्यादा आ रहा है तो सब क्यूटेनियस 3070 वाली जो हमने इंसुलिन दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमें अवेलेबल है, अगर 120 to 160 के बीच में ब्लड शुगर आ रहा है तो उसको 4 यूनिट्स लेनी है। 160 से 200 के बीच में आ रहा है तो उसको 6 यूनिट सब क्यूटेनियसली लेनी है, और अगर 200 से ज्यादा आ रहा है तो 8 यूनिट्स, उससे भी ज्यादा आ रहा है तो स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग हमको लेनी है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या रहेगा? फास्टिंग हमारा लेस देन 95 होना चाहिए एंड पोस्ट प्रैंडियल शुड बी लेस देन 120 मिलीग्राम %। अब हमने फास्टिंग ब्लड शुगर एंड 2 आवर्स ब्लड पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, जब इंसुलिन ले रही है पेशेंट तो उसको कब कब बोलेंगे? एवरी 72 आवर्स या एवरी 3rd डे शी हैज टू चेक कि उसका शुगर कैसा चल रहा है। फास्टिंग भी उसको करना है एंड पोस्ट प्रैंडियल भी करना है। अब उसने फास्टिंग चेक किया, लेस देन 95 है एंड 2 आवर्स पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर लेस देन 120 है, तो वो जो भी डोज ले रही है, 4 यूनिट 6 यूनिट्स जो भी ले रही है वो उसको कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन फास्टिंग कम आ रहा है, फास्टिंग नॉर्मल आ रहा है, लेकिन पोस्ट प्रैंडियल ज्यादा आ रहा है, तो पोस्ट प्रैंडियल यानी खाना खाने के बाद ज्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली हमें थोड़ी सी डोज बढ़ानी पड़ेगी, या फिर ऐसी कंडीशन हो सकती है कि फास्टिंग भी ज्यादा आ रहा है और पोस्ट प्रैंडियल भी ज्यादा आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो तीनों कैटेगरी हमारी अलग हो सकती है, इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके डॉक्टर आपकी हेल्प करेंगे। तो फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 95 और 2 आवर्स पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर लेस देन 120 आ रहा है तो उसी MNT से एंड उसी डोज साइकिल, उसी इंसुलिन की डोज पे आप मेंटेन रखिए। लेकिन अगर 2 आवर्स पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर ज्यादा आ रहा है एंड फास्टिंग ठीक आ रहा है तो बेस इंक्रीज डोज ऑफ इंसुलिन बाय 2 यूनिट्स, ब्रेकफास्ट प्लस MNT एंड फिजिकल।
तो ब्रेकफास्ट से पहले जो आप डोज दे रहे हैं बस उसको आपको 2 यूनिट बढ़ा देना है। और अगर लेकिन दोनों चीजें बढ़ी आ रही है, फास्टिंग भी बढ़ा आ रहा है, यानी रात सुबह जब उठेगी तब उसका बढ़ा हुआ आ रहा है एंड उसका जो है पोस्ट पैंडल भी बढ़ा आ रहा है, तो आपको प्री ब्रेकफास्ट एंड प्री डिनर, क्योंकि फास्टिंग भी बढ़ रहा है तो फास्टिंग क्या पूरी रात के बाद का शुगर जो है उसका बढ़ा हुआ आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको डिनर से पहले थोड़ी सी डोज देनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, सो दैट रात भर का करके फास्टिंग उसका कंट्रोल आ रहा है। तो ऑल अंडरस्टूड। अगर फास्ट जो है फास्टिंग भी बढ़ा आ रहा है तो हमें रात की डोज भी देनी पड़ेगी, तो 2 यूनिट्स आपको इनिशियली प्री डिनर भी आपको बढ़ाना पड़ सकता है। तो इस तरीके से अगेन शी हैज टू मॉनिटर फॉर एवरी 3 डेज, और एवरी 3 डेज में फास्टिंग एंड पीपी देखती रहे। फास्टिंग और पीपी दोनों नॉर्मल है तो उसी डोज पे कंटिन्यू करना है। फास्टिंग नॉर्मल है, पीपी बढ़ रहा है तो प्री ब्रेकफास्ट इंक्रीज करना है। अगर फास्टिंग भी बढ़ा हुआ आ रहा है एंड पोस्ट प्रैंडियल भी बढ़ा हुआ आ रहा है तो आपको प्री ब्रेकफास्ट एंड प्री डिनर दोनों की दोनों इंक्रीज करनी है। ये आप चार्ट अपने उसमें लगा सकते हैं और एवरी 3 डेज उसको चेक करने के लिए बोलना है हमको, एंड इसी हिसाब से हमें ब्लड शुगर कंट्रोल रखना है। अगर बहुत ज्यादा वेरी हाई 2 आवर्स पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर आता है, 200 से ज्यादा होता है, तो सीधे हम 8 यूनिट्स, ऑब्वियसली स्लाइडिंग स्केल के हिसाब से 200 से ज्यादा अगर शुगर आए तो 8 यूनिट्स हमको प्री मिक्स इंसुलिन लेना है एंड सेम उसी डोज के अकॉर्डिंग फास्टिंग एंड पीपी हमको फॉलो करनी है। एंड ऐसे पेशेंट की केयर हमको थोड़ी ज्यादा करनी है, थोड़ा जल्दी फिजिशियन या जो भी आपके ट्रीटिंग मल्टी मोडालिटीज हैं उसको भी इन्वॉल्व करना है, ठीक है। एंड उसको पहले से इमरजेंसी नंबर्स और वो सब दे के रखने हैं कि देयर कैन बी इमरजेंसी, आप तुरंत हॉस्पिटल आ सकते हो कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये हो सकता है कि शुगर उसका बहुत ज्यादा रेस्ड है, 200 से ज्यादा रेस्ड है, 20 यूनिट्स इंसुलिन हम देकर भी उसका ब्लड शुगर अगर कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स में आप उसको क्या ऐड कर दो, मेटफॉर्मिन ऐड कर दो। तो 20 से ज्यादा अगर इंसुलिन यूज हो रही है यूनिट से एंड तब भी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, तो आपको उसको मेटफॉर्मिन ऐड करनी पड़ेगी। तो ये हो गई हमारी मेटफॉर्मिन एंड इंसुलिन की बात। अब जब भी हमने इंसुलिन दिया है, इंसुलिन के बाद उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, मान लिया उसने जितनी डोज ली है उस हिसाब से खाना नहीं खाया या कोई इन्फेक्शन है या कोई और दिक्कत है, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, जब ब्लड शुगर लेस देन 70 मिलीग्राम % हो जाए। तो जब भी उसका ब्लड शुगर डिरेंज होगा तो उसको ये सारे सिम्टम्स बता के रखिए कि आपको घर पे मान लें इंसुलिन लगाया, डोज कहीं ज्यादा लग गई या फिर आपने उसके हिसाब से प्रॉपरली खाना नहीं खाया, तो आपको जो है हाथ आपके कांप सकते हैं, थोड़ा सा आपका पसीना एकदम से छूट सकता है, आपको अचानक चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, बहुत ज्यादा लिथार्जी यानी वीकनेस हो सकती है, भूख बहुत ज्यादा लग सकती है, या फिर अचानक से आपको कम दिखाई देकर आपको चक्कर आ सकता है। तो ये सारे फीचर्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया उसको बता के रखना है। जो इंसुलिन वाले पेशेंट्स होते हैं हम उनको बोलते हैं कि वो अपने बैग में, पर्स में, जहां भी काम करते हैं वहां पर एक्स्ट्रा कैंडीज जरूर रखें। मान लिया हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो एटलीस्ट जैसे उनको ये फीचर्स पता चलते हैं तो वो ये चीज ले सकते हैं। अगर जैसे मान लिया ग्लूकोज है तो 3 टीस्पून उसको एक पानी ग्लास में डाल के पीना है। अगर शुगर नहीं है, घर पे है, मतलब लाइक ग्लूकोज नहीं है, तो आप 5 से 6 चम्मच चीनी भी, यू कैन ऐड शुगर इन वाटर एंड यू कैन टेक फ्रूट जूस है तो आप फ्रूट जूस ले सकते हैं, या कोई भी टॉफी, जैसे हमने बताया टॉफी आपके पर्स में है आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। तो शुड वी गो, पारुल मैम, शुड वी गो फॉर क्वेश्चन आंसर्स? Please continue. यस मैम। तो इफ ब्लड शुगर ऑफ अ वुमन, अब हमने क्या बात करी थी, 20 वीक से, 20 वीक से ज्यादा तो मेटफॉर्मिन इज ओके एंड 20 वीक से कम है तो हमारा जो है इंसुलिन पे ही लेना है। नाउ शी इज 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड 170 मिलीग्राम % उसका जो है ब्लड शुगर आया है, तो व्हाट शुड बी द मैनेजमेंट? डाइट, एक्सरसाइज एंड इंसुलिन आफ्टर ओजीटीटी अगर होगा तो हमारा आंसर कुछ और होगा। 170, 142, 200 के बीच में है ना, तो वी विल बी गिविंग हर डाइट प्लस एक्सरसाइज, राइट?
and we will again see for postprandial blood sugar. अब अगर फिर से 120 से ज्यादा है तो we will start insulin. What is the required postprandial? अब हमने MNT के बाद पेशेंट आई है, postprandial blood sugar 2 hours पे किया है. What should be the adequate levels? Less than 120, less than 140, less than 120, less than 180, less than 200. It is postprandial. 140. 120. Yes, somebody has answered less than 120. Yes, 120. A bit of postprandial. We are doing not OGTT. We have done after OGTT. She has gone through MNT. अब हमने 2 hours postprandial blood sugar किया, तो that should be less than 120. If blood sugar of a woman at 30 weeks of pregnancy is 210 milligram %, 210 आया 30 weeks पे, what should we do? Yes, very nice. अब तो 200 से ऊपर है and 30 weeks है, we have to start with diet. Very nice, very nice. Diabetic diet should be split into, although ये MNT का क्वेश्चन है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. 2 major meals plus 2 snacks, 2 major meals. Basically इसमें क्या होता है, छोटा छोटा खाना छोटे छोटे पोर्शन में लेना होता है, so that sugar एकदम से राइज नहीं करता है. तो what should be the answer? 3 major meals and 3 snacks. 3 snacks. 3 major meals and 3 snacks. If a woman on diet therapy experiences, diet therapy पे है, experiences sweating हो रही है, weakness, headache, तो it is normal. She should take insulin or she should take fruit juice. No. She should take fruits juice. Fruit juice. Third one, ma'am. थर्ड वन की हाइपोग्लाइसीमिया के फीचर्स हो सकते हैं, उसके बाद ब्लड शुगर मॉनिटरिंग जरूर करें. मील विद राइस, अभी डॉक्टर शैली मैडम ने भी ये पूछा, मील विद राइस एंड पोटैटो हैज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई होना अच्छी बात है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेना चाहिए हमको, लो मैडम, लो लेना चाहिए, so that sugar is not very much raised. If a pregnant woman is hungry even after, अब खाना खाने के बाद भी भूख लग रही है, यानी उसने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लिया, तो अब उसको क्या लेना चाहिए? She should have a juice, salad, so that उसके स्टमक में बहुत देर तक रहेगा और उसको जो है हाई लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड रहेगा, so that उसको देर तक भूख नहीं लगेगी. राइट. What things are to be remembered when asking the woman to have exercise? Weight bearing to be avoided, वजन नहीं उठाना है, दौड़ना है, jumping, all of the above, 100 steps after every meal. देखिए सारे points बहुत important है. And if a woman was already exercising, so she has to continue that exercise. So all of the above. When eating fish, what has high, medium or low glycemic index? High किसका होगा? I want to 60. Eating fish. एक फ्राइड का है, एक ग्रिल किया हुआ है, एक स्टीम किया हुआ है. फ्राइड फिश, फ्राई. एंड मीडियम किसका होगा? ग्रिल्ड का. एंड लो किसका होगा? Steamed. यस, दिस इज द क्वेश्चन. हाँ, इस हिसाब से यू कैन काउंसिल. कई बार पेशेंट हो सकते हैं कि डॉक्टर आपने, सिस्टर आपने हमको बोला था फिश खाना है, तो आप पूछ सकते हो कि फिश किस तरीके से आप ले रहे हो, तो वो भी एक रीजन हो सकता है उसका ग्लूकोज कंट्रोल ना होने का. If a family does not have refrigerator and woman needs to store insulin, where she should keep the insulin? Kitchen shelf पे, मटका में she can keep. पॉलिथीन में डाल दे and then पॉलिथीन से वो. After injection of insulin, local site should be rubbed well. बड़े अच्छे से रब कर देना चाहिए. True or false? false. रब नहीं करना उसको, है ना? False. Thank you. पारुल हो गया? नहीं, हाँ,
Sangeeta, please ask question on the sites of insulin. Sites are given. Can we give insulin on abdomen in pregnancy? Can we give, Preeti ma'am is asking, can we give insulin on abdomen In pregnancy? in pregnancy? Very important question. Answer is yes. You can give insulin on the abdomen. It is not contraindicated. Okay. So rest of the sites Sangeeta has already mentioned, but you have to be very careful when you're giving insulin on the abdomen. It is not that it is contraindicated. You can give insulin. Okay. Thank you so much. Now we can have comments from Dr. Vidya Thobi. She has joined because she will leave again. Take her comments first. Yes, I was just listening all the talks, and I think they are very superb, and people could understand today's all the talks, and they answered very quickly. And whatever MCQs, any questions were asked before, so many answers appeared in the chat box. So that shows the successful delivery of all the talks. I want some feedback from the those who have joined here. They also should put something in the chat box that which part of today's topics was difficult for them to understand. Today, all the sessions held so far. All the sessions, so that and that can be explained immediately today itself in Kannada. Because once this session is finished, we feel that everything is learned by these healthcare workers. So I want some feedback. Ellaru alle chat box alli 3 sessions ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು or ಇಲ್ಲಿ ತನ gestational diabetes ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ chat box ಅಲ್ಲಿ yes or no ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ will explain you those topics and highlight them. If some of you are answering and some of you are just keeping mum, we just feel that everybody has understood, because now the assessment part will start. So for that reason we are asking. So can some people be unmuted and they can respond to this? Shobha, are you there, Shobha? Hello? Mute. Yes, Dr. Shobha is there, but we can't Unmute. hear her. She's Okay. unmuted. We can't hear her. Can some of the healthcare workers be unmuted? Yeah, already they are. They can. So, but then they should answer whatever I told them. Because many of them were answering previously. Anuradha from Kalgi, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ. Then Dhanalakshmi. Yes, she has. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತಿಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ರಿ. We also want some feedback. Otherwise, we will not know whether you have learnt or not. ನೀವು ತಿಳಿದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು? Vijayalakshmi, Ballari SR Hospital. Please make your video on how many of you are listening. We want to know. How many of you are listening? Do you like Rohini Bukte. Rohini Bukte is there. Then Priyanka is there. Please make your video and video on. Everything you should listen video on. What I feel. Don't shut off your videos so that we know that how many of you are really learning. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಏನ್ ನಾವು ಎದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Only few of you will answer the question which is asked in the MCQ, and we feel happy that they have understood anta. So Anuradha from Kalgi PHC, please ask your how many people are means we want to take a video shot only. Video means click only. How many of you are ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡು, ಒಬ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಅವರು. ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು. Okay, Indira.
ತುಂಬಾ ಜನ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ we don't mind our dress ಕಡೆ ನೋಡಲ್ಲ ನಾವು. We are not That looking is at not the their dress. fault. Let them, we are not talking about that. So whether really they are listening or not, or just making on, I just Illa, wanted to madam. know. They are Illa. interested in learning, madam, because on a Sunday they have joined, 60 people have joined. It's a very great thing, I feel. No, I appreciate, but just whatever we are teaching, whatever the feedback I want some feedback. At least they should put in the chat box. I don't want that. That is what is my feedback. Yes, Okay, madam. ಒಬ್ರು ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶೋಭಾ? ವಿಘ್ನೇಶ್. ಸಿಸ್ಟರ್, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಮುಖ ತೋರಿಸಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. See, I came home, so I have made my video on. ಮೇಡಮ್ ವಿನುತಾ, ಹಲೋ ವಿನುತಾ. 1 2 3 4 ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಹಳ್ಳಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅನುರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಂಗೀತ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿನೀತಾ ಇಸ್ ದೇರ್, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಸೆಷನ್? ಮೇಡಮ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹೇಳಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಸೆಷನ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ? Yes ma'am, it was very nice ma'am. They taught us in simple words, and it was very easy to understand by the workers ma'am, staff nurse and all. And ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲ, this is uploaded in YouTube, no? So you can listen many times. Yes ma'am. Yeah, and PPT is uploaded in the session wise. The PPT is available in your group also. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀವಿ. 2-3 times ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ they can understand ma'am. And it's very useful ma'am, this session. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ, ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೇ ಬೇಡ ಮೇಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಏನೇನ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನೇನ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. Yes. Assessment of. Yes ma'am, ಕೊಪ್ಪಳ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ದು. Yes. Very good, very good. ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ನೀವ್ ಯಾರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? Very good, very good. ಅಂಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ವಿನುತಾ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಇದೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅಷ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ನೋಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 to 3 GDM cases ಮೇಡಮ್. ಇನ್ ಕೊಪ್ಪಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಮೇಡಮ್. Like in a month we get 1 or 2 madam. But age at pregnancy ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, now we are seeing more cases madam. Like 50% of the patients are 30 plus cases, no Shobha? Yes. So I want to congratulate today's session, which is successfully completed by, I listened to Shaili, I listened to everyone, Sangeeta. So it was really very simplified presentation. So our healthcare workers have enjoyed. Dr. Vidya, all the sessions held, Dr. Vidya, all the sessions held so far were really very informative. Very informative. And I am really very happy that every single member of Foxy Safe Motherhood Committee is so much committed. You just see Bhavna, Parul, and Shaili, today Sangeeta, so many people, they're so committed, as our team is also committed. So 60 people, as Shobha told, they have joined. So remaining those who have not joined, what you are going to do, Shobha, that I wanted to know. Madam, ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ madam. Many people are watching through YouTube. 15 to 20 will be watching. So you take the feedback from them also. Why they have not joined, I want to know.
So ಇಲ್ಲ let ಮೇಡಮ್, me, ಒಂದು those who are phone ಅಲ್ಲಿ constant So default, they have joined, but through YouTube they will link. be joined. Yes, yes. Good. ಮೇಡಮ್ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಫೋನ್ ಇಂದ 3-4 people are joining. So we are getting only 60 number here. ಈಗ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 mobiles are on, but 10 people have joined like that. So one person is answering. ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ನದು. Okay. Okay. Looking forward for the mentoring session now. Preeti, hearty congratulations on this Sunday. Same to you. And really it is good. Same good to one. you, Dr. Vidya. Same to you. Yeah. So it is really So, nice. Shobha, can you just summarize both the talks in Kannada? Yeah. All the 2 talks. Yes, madam. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಡೇ ದಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಲಿಡೇ ಮೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರುನು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಲಿಬೇಕನ್ನ ಆಸೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೇಫ್ ಮದರ್ಹುಡ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದನೂ 10 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋರ್ ದನ್ 10 people have joined from safe motherhood committee. That shows their zeal towards teaching, and I thank them all wholeheartedly. ಇವತ್ತಿನ 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು GDM ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ಕೊಡೋದು. ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ GDM ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೀವು ಒಬ್ಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ಲು, ಅವಳಿಗೆ OGCT ಮಾಡಿದ್ರಿ. OGCT ಅಂದ್ರೆ 75 grams ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು 2 hours ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಶುಗರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 140 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವರಿಗೆ ಡಯಟ್ರಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಡಯಟ್ರಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅಷ್ಟ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಪೇಷಂಟ್ ನ? ಇಲ್ಲ, 15 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರಿಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ 2 weeks ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರೆದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ 120 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಓರಲ್ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ PPBS 200 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ 140 ಇಂದ 200 ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಡಯಟ್ ಅಂಡ್ ಓರಲ್ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಯಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಅವೆರಡು ಆದ್ಮೇಲೆ 14 days ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರೆದು ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ 14 days ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್ ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ 120 ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ PPBS. ಇಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಬೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸೋಮಿ ಅಂತೀವಿ, ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಹೈಡ್ರೋಮಿಯಸ್. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡೋಸೇಜ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನೇನ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಊಟ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊಡೋ ಜಾಗನ ಅವರು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸಾಬಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಬೇಕು. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿರಿಂಜ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸಿರಿಂಜ್ ನ ನೀವು ಎಸಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 8 degree centigrade ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಡಿಸ್ಬೇಕು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಮಡಕೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೋತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ನೀವು ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಿಮಿಯಾದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಿಮಿಯಾ ಆದಾಗ ಏನೇನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಿಮಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ತಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಯಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಗ್ಲೈಸಿಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋ ಅಂತ ಫುಡ್ ನ ತಗೊಬೇಕು. ಲೋ ಗ್ಲೈಸಿಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾರಿನಂಶ ಉಳ್ಳ ಅಂತ ಊಟಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿಗಳು, ಸಲಾಡ್ಸ್, ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿದ್ ಕಾಳುಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಊಟ ಸಲಾಡ್ಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಿದ್ರೆ 1/4 ಭಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ, ಇನ್ನ 1/4 ಭಾಗ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಬಂದ್ ಕಾಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಪನ್ನೀರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಕೂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ತುಂಬಾ ಜಂಪ್ ಮಾಡಂತ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಭಾರ ಹೊರ ಅಂತ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ತುಂಬಾ GDM ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ವಾಕಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 or 2 kgs ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್ ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದೊಂದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ GDM ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ GDM ಪೇಷಂಟ್ ಗಳು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬಹುದು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ 6 weeks ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು OGCT ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. OGCT 140 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. OGCT ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಬ್ರು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಕಡೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನ್, ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆನೆ ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಶುಗರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಔಟ್ಕಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನ್ ಏನೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ IUCD ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ IUCD ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್, ಪಿಲ್ಸ್, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋ ತಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು, ಆ ಮಗುನಲ್ಲೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಗು ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ಮಗುಗೂ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಮಗುನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಗೆ ತಂದೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. That's it, madam. Yeah, I think you have covered everything. We could follow. Insulin free matka, I could follow. Thank you for the wonderful extempore coverage of all the talks. Very nice. So should I ask Dr. Shobha? Bhavna to present her work? Yes. Shobha has answered explained very nicely, I think, madam, in Kannada. Yes. Yeah. Very nice. Extempore. Hello. Bhavna? Yeah. Good evening. I feel honored to present vote of thanks for this sumptuous academic third session on GDM. We are grateful to Foxy Leaders President Dr. Rishikesh Pai, Secretary General Dr. Madhuri Patel, Vice President Dr. Alka Pandey for their wholehearted support to every venture of SMC Foxy. Heartfelt gratitude to Dr. Hema Divakar Ma'am, ICOG Dean Kasoga, Dr. Vidya Thobi Ma'am, President Kasoga, Dr. Rashi, Dr. Suman, Dr. Shobha, and team for guidance and working hand in hand meticulously for this noble cause. We are thankful to esteemed speakers, Dr. Sangeeta Arya, Dr. Shelly Agarwal, and our extempore speaker, Dr. Shobha, for their illuminating yet so simplified talks. Credit of success goes to all participating facilities and their healthcare workers. This mission would be impossible without you. Above all, my gratitude to the person who is brainchild behind this whole plan. Her consistent efforts have made a significant impact on safe motherhood. She is none other than our visionary personality, Dr. Preeti Kumar Ma'am. Loving thanks to my co-conveners, Dr. Parul Gupta and Dr. Shobha. Last but not the least, thanks to our tech support team. Thank you so much for joining on this holiday event and participating actively. Thank you. Thank you, Dr. Parul, and thank you, Dr. Bhavna, and thank you, Dr. Vidya, for joining today. Thank you so much. Thank you very much, Preeti. Thank you. Thank you, madam. Thank you, everyone. Shelly and Sangeeta, excellent talks. Thank you, ma'am. Shobha, you summarized very well. Thank you, ma'am. Madam, I have to teach you Kannada to believe in you. Okay, bye. Okay. Bye. Madam, Vidya, madam, next session on HTP starts on 28th. Yes. So we'll meet again on 28th. Till then, you can do many. Yeah. Bye. Bye, madam. Bye. Vidya, madam, Tuesday in the ನಾವು Yes, Shobha. Tuesday in the just send me all the HDP PPTs just to see what, because I think some of them should be revised, madam. Okay. ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. Thank you, Shobha.
Thank you. Madam, GDM PPTs we need. Only one PPT is with me. All other PPTs have to be shared in the group so that I can share in the healthcare workers group and they can revise. Bhavna madam's and Mridula madam's PPTs we need. Please do share in the core group. Okay, thank you everybody. Let's close the session. Thanks for attending. Thank you, ma'am. Thank you everyone.